intervention. Sorry for the interruption. So this is our today's topic: starting selling your hourlies and winning clients' trust. It's our session 8, and this is our session's agenda. We will be talking about serving on hourly on Fiverr and building clients' trust. So we were discussing about serving on hourly basis on Fiverr. So it's like कि आपको गिग के अंदर मेंशन करना है, और किसी ने सवाल किया है कि कौन सी गिग्स जो हैं वो हम आवर के उस पे दे सकते हैं. सो फॉर इंस्टेंस राइटिंग एसेज, राइटिंग लेसन प्लान्स, टीचिंग ऑनलाइन, डेटा एंट्री. ठीक है, एसईओ के भी काम हो सकते हैं राइटिंग से रिलेटेड, तो आप ये चीज़ें आवर बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हो. Or any gig, like for instance if you are working on graphic designing, so you can provide your services within hour or two, because Fiverr पे minimum जो टाइम पीरियड होता है वो 1 डे का होता है. तो व्हाट यू विल डू, आप ऊपर मेंशन करेंगे कि आई विल डू दिस टास्क इन 1 hour or 2 hour or 3 hour. So that is very important because people are really convincing when you are talking about less time. All right, moving forward. Now it's very important topic: building clients trust. So there are various factors that come across when we talk about clients trust. आपसे क्वेश्चन है कि हमारा मतलब एज अ फ्रीलांसर्स हमारे लिए क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है, और हम इस ट्रस्ट को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं. यू कैन ओपन योर माइक or you can write in the chat box. I need responses from all of you. Yes, the mic is open and the chat box is open as well. Anyone? Iza, Azhar, Fiza, Hadia, Isra, Usman, Sanjana, anyone who would like to respond? Yusra. Please go ahead. The chat box is open. Hanifa has responded, in order to get good reviews, which will be good for our profile. Of course, reviews are very important. We will be talking about reviews because the client is paying and building trust is important. So we can sell our gigs as much as possible to earn positive reviews from the clients. Of course, Shiza, that is very important. And how we can do that? What are the factors that will, build our trust with our clients? By doing accurate job, of course. You are very much right, Hanifa. Effective communication and reliable work. Fast as possible. Perfect. These all are very important factors which will, enhance our trust with our clients. Being honest. Honesty is very important, of course. So we will be focusing on some of the main components of trust building. Number one is learn to communicate. As one of our friends said, effectively communication. Our previous session was about communicating on Fiverr. So kindly उसको go through कीजिए. कोई भी confusion है communication से related, आप हमें बताएं, ग्रुप में शेयर करें. आजकल ग्रुप काफ़ी सुना सुना नज़र आ रहा है. बिल्कुल सुन लगे पड़े हैं आप. सो आप काइंडली थोड़ा एक्टिव हो जाएं. आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी लेजिट एंड जेन्युइन इशू. सो जैसे ही आप के एग्जाम्स ख़त्म हो जाए, इंशाल्लाह, सो वी विल बी going back to our previous sessions. तो अगर उनमें से आपको कोई भी confusion हो, कोई भी query हो, तो आप ज़रूर उसमें mention करें मुझे and ask questions from about communication and all. It is very important कि आप किस तरह उनसे communicate करते हैं. अब communication में भी there are many things, factors. First of all, तो अब आप जब किसी के साथ आप pronounce करते हो, तो आप उनके नाम से प्रोनाउंस करो.
क्योंकि नाम एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी जो है ना मतलब ऐसे समझे कि नाम होता क्या है बेसिकली, नेम होता क्या है। हमारी लैंग्वेज में हमारा नाम जो है सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत चीज होती है हर इंसान की। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल देम विद देयर फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम इफ यू आर बीइंग मोर प्रोफेशनल। सो क्योंकि नाम सबको पसंद होता है अपना, अगर आपको कोई अपने नाम से पुकारेगा तो इट इट रियली क्रिएट्स अ बॉन्ड। सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, your tone should be very polite, and I have already mentioned other aspect of communication in our communication session last week. So please go through that and you will get a lot of information about communicating on Fiverr. आप किस तरह अपने प्री प्लान जो है वो मैसेजेस वहाँ पे रख सकते हैं। मेरी वॉइस कम आ रही है। अभी कैन यू हियर मी प्रॉपरली इकरा? Sana is saying it's very essential to provide, our work with loyalty. Moreover, variety of work to manage in time as well as make our gigs more attractive. That will stimulate the client's trust strong. Of course, you are very much right, Sana. Okay, Kra. Thank you for letting me know that my voice is clear now. ठीक है, communication is very important when you are working on Fiverr because they don't see your face, they don't see your facial expressions. Whatever they are communicating with you, it's just your writing style and tone and your choice of words and how you are behaving with them. So try to be as formal as possible, and you should call them with their first name or second name, and be reliable, of course. People need up for instance, take an analogy or take an example. आप किसी भी जो है वो सिचुएशन में होते हैं तो आप सबसे पहले जहन में कौन आता है आपके? किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, जब आप किसी गहरी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो सबसे पहले आप किसका नाम सोचते हैं जो आपकी इस मुश्किल से आपको निकाल सकता है, आपकी ये मुश्किल हल कर सकता है? वो कौन होता है? एनीवन? Almighty, of course, Almighty, but when it comes to your relations, so of course your friends, your family members, Allah, parents or friends, teachers, of course, these are best friend. Usman, you are very much right. So try to be best friend with your client. आपको वो अगर एक दफ़ा किसी एडिट के लिए कह रहे हैं, आपको कोई माइनर एरर है, ठीक है, उसको एडिट करने के लिए कह रहे हैं, तो आप उनको बिला झिझक एज अ फ्रेंड उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनको वो सर्विस प्रोवाइड करें। ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसके लिए भी छोटी छोटी चीज़ के लिए भी उनसे पे करें। जैसे माइनर एरर्स हो जाती हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप ये हल करके दें या थोड़ी उसमें एडिटिंग की ज़रूरत है, तो आप एज अ फ्रेंडली उनसे जो है ना कम्युनिकेट करें। नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैसों की लालच में, बट to build a relationship with them, to be reliable for them so that they can refer to their own friends as well as वो आपके जो है वो दूसरी दफा आए आपके पास काम करने के लिए because of your this behavior. So try to be reliable for them, try to be their best friend. अगर कोई भी एरर वगैरह आता है, किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन है, तो आप उनसे अच्छे तरीके से उनसे कहें, ना कि हम जिस तरह हो जाते हैं ना कि अच्छा ये करूंगा तो मैं आपसे पैसे लूंगा इस चीज़ के। तो इस तरीके से रहिए। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको थोड़ी बहुत जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। माइनर एरर्स, अगर एडिट आपने उनको एक रिव्यू दिया था बट दे नीड मोर लाइक रिव्यूज, तो आप उनको दे दें, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, इस तरीके से यू कैन बिकम मोर रिलायबल फॉर देम। Somebody says deliver on time. Of course, time is very important. Why they are hiring you? Because they don't have time. They know everything, right? जिनको फाइवर यूज करना आ रहा है तो मतलब उनको सारी चीजें आ रही है। अगर वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, which means they can do their own work by themselves as well. तो इट्स नॉट कि आप जो है मतलब यू आर नॉट एक्सपर्ट ओवर देयर। तो
they know everything about work they are asking to do. तो आप टाइम पे डिलीवर करें उनको, जितना अच्छा डिलीवर करेंगे, टाइम से पहले डिलीवर करेंगे, तो दैट्स गुड. अगर आपको लग रहा है कि दिस क्लाइंट इज अ बिट लाइक थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्लाइंट, तो आप उनको मतलब 5 से 10 मिनट ऑर्डर की डिलीवरी से पहले दे दें. अगर ज़्यादा पहले देंगे तो आपको बार बार रिव्यू करने के लिए कहेंगे. तो मेक श्योर कि यू डिलीवर ऑन टाइम, बिकॉज उनके पास डिलीवरीज जो है वो मतलब डिलीवरी का भी इशू होता है. वी विल बी लर्निंग अबाउट दैट इन आवर कमिंग सेशन. एंड मोर ओवर दे हैव डेडलाइंस टू, सो ट्राई टू stick with their deadline. Don't make excuses. If you are making excuses, no, I'm busy, I'm attending this ceremony with my friends, I will be talking to you later. इस तरह के excuses नहीं देने. ठीक है. आप ऑलरेडी हमारी कम्युनिकेशन वाली क्लास में जो प्रीवियस थी उसमें मैंने आपको जो प्री प्लान मैसेजेस हमारे होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे सिखाए हैं कि किस तरह आप जो है वो मैसेजेस टाइप करके ऑलरेडी सेव करके रख सकते हैं. और जब भी वक्त आए, जैसे आपको कोई क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि मतलब अप्रोच कर रहा है, तो आपको किस तरह उससे फर्स्ट इंटरेक्शन करना है, उस तरह के आप मैसेजेस ऑलरेडी बना के रखें. अगर आप बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, क्लास में कहीं और हैं, कहीं दूसरी कमिटमेंट है आपकी, तो आप वो जो है वो इंस्टेंट मैसेज आप उनको सेंड कर दें, ताकि एक ट्रस्ट बिल्डअप करता हो. और अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप में एक्सक्यूज ना करें कि या उनसे जो है वो ज़्यादा एक्सटेंशन ना मांगे टाइम की. सो अगर आप एक्सक्यूजेस मांगेंगे, there are plenty of people waiting for their first orders. So try not to be more kind of reluctant when it's coming to respond to them. Ask for feedback whenever you are done with your order. वो तो ज़रूरी है ही है, of course आपके reviews के लिए it's very important. But if they are if they are canceling your order, if they are not giving you any sort of order, ask for feedback. Like, why you hey hey dash your matlab, which means like their first name, or for instance, hey Sana, why you I was looking forward to work for you, but I saw that you haven't replied me recently. So are we still talking about our previous order that you sent? Is तरह की communication, it shows really positive behavior of you. It really shows positive response of you. Okay, you are very much concerned about your work, and you are very much ethically and morally sound. Learn from your mistakes, of course. When they are rejecting you, when you are not pretty sound about your work quality, you are not sound about your own profile, just try to get feedback from somebody. Like, this is our circle, like we are friends. It's been really great to interact with you all. और हमारा काफी अच्छा interaction रहा है, and pretty much you are already familiar with each other. Mostly you guys are class fellows. Excuse me. आप काफ़ी जो है क्लास फेलोज हैं, तो आप एक दूसरे से प्रोफाइल शेयर करें, आप फाइंड आउट करें कि कौन सी मिस्टेक है. Even you can hire you can ask somebody from your circle, from outside of your classroom, outside of your department, those who are active on Fiverr. Just try to ask them, okay, please give me your precious time on my profile, कि आप उसको थोड़ा फीडबैक दें, मुझे रिव्यू करें मेरी प्रोफाइल को, कि इसमें कौन सी कमी कोताहियाँ हैं जो कि मैं दुरुस्त करूँ. And try to learn from Fiverr forum, Fiverr community. We have already talked about that. So try to be as responsive as possible and learn from your own mistake. इकरा शेख is saying clients response नहीं करते, हम लोग एक दूसरे के अकाउंट्स पे बाय मोड करके रिव्यू पुट कर सकते. जैसे of course we will be talking about that as well, कि अगर आपके पास clients नहीं आते तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. So we will be talking about that as well after this session.
जो हमारा लास्ट में थोड़ा टाइम रहेगा उसमें हम इसी इसी चीज़ पे बात करते हैं। डोंट अपोलोजाइज टू मच। अगर कुछ काम आप कर रहे हो ड्यूरिंग दैट वर्क, आपने कोई मिस्टेक की है, किसी कोई टाइपो एरर है, हो जाता है, वी आर ह्यूमन, इंसान है, हमसे भी मिस्टेक्स हो जाती है, वी आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट। अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई, आपको दूसरे तरीके से आपने उस चीज़ को कॉम्प्रहेंड किया है, एंड यू हैव डन लाइक रियली वियर्ड जॉब which is obvious, and हम इस situation से go through करेंगे a lot of time। so आपको बार बार अपोलोजाइज नहीं करना उस चीज़ के लिए, सॉरी सॉरी इस तरह नहीं करना। तो अगर आप खुद आइडेंटिफाई करते हो तो आप उनको कह दो कि हेलो देयर, लाइक you can ask, you can, hello Usman, I just noticed, I just went through your task and I find out few mistakes. If you haven't submitted your task, if you are still in the process of that particular task, I can edit for you if that is feasible। तो आप इस तरीके से उनसे पूछें, and don't apologize if they have recognized your mistakes। You can just straightforward say ke, that's my mistake, I really take that, and thank you so much for your feedback, I'm just making changes into that particular document। And be trustworthy, because people really want to work with those who are trustworthy, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें। कोई भी आपको एम्बिगियस चीज़ नहीं दिखानी एट द इनिशियल लेवल, जैसे आपकी थोड़ी प्रोफाइल बिल्टअप हो। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले में ही आपको शातिर नहीं बनना। हम बनेंगे शातिर लेकिन पहले नहीं, थोड़ा आहिस्ते हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए उनके साथ, हमें थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाए, थोड़े रिव्यूज़ मिल जाएं, देन वी विल बी यू नो हम उसमें फिर हमारा जो जुगाड़ वाला काम है वो हम चलाएंगे। Your questions are welcome, and we will be talking about that review thing in last. And I've also put these. I hope you like the some cartoonic figures in our today's presentation, and these were taken from these sites, FreePic and vectz.com. So you can just go, and if you are working on any PowerPoint, just add these graphics. So it will really give sort of good you know aesthetical kind of experience while you are reading those slides and while you're going through those slides as a reader or as a presenter। I will be sharing the recording of the session as well as the PPT in the our group in our group। अभी हम बात करेंगे हमारी जो है वो इकरा ने ये सवाल किया था कि क्लाइंट्स किस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे पास रिव्यूज नहीं आते। Shiza is saying it's almost 5 months since I made a gig content writing but still didn't get any single order। So what we have thought about that thing कि हम किस तरह इस चीज़ को कर सकते हैं आपस में कि for instance you have to invest some amount for that, like $10 मैक्सिमम आपके पास होने चाहिए, और आप एक दूसरे को जो है वो एज अ क्लाइंट रिव्यूज दें। तो हमने ये सोचा है एटलीस्ट $10 होने चाहिए आपके अकाउंट में, तभी आप इस चीज़ को परसू कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाह रहे तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो या दिस इज़ द ओनली वे, एक दूसरे की हेल्प करके वी कैन डू, दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर आप ऑर्गेनिक रिव्यूज़ के बारे में कह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल को डायरेक्ट बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा। कल हमारे इम्प्रेशंस और उसके बारे में सेशन है जिसमें हम सर्च करेंगे हमारे इम्प्रेशंस को और इम्प्रेशंस किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं उस चीज़ को। Yes, for being online always is very important, that's why I've asked you to download Fiverr in your mobile phones, because आप उसमें अच्छे तरीके से बार बार उसको कर सकते हैं, लॉग इन लॉग आउट और ऑनलाइन अपना स्टेटस शो कर सकते हैं। सो मेक श्योर you all have downloaded the app version of Fiverr, which is very important। So first make sure that your profile is ready, your gigs are ready, your profile description and gigs description is up to the mark,
and then download your Fiverr, you know, आप फाइवर में जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसको बार बार ओपन करके देखते रहें। ठीक है, आप अपने इंप्रेशंस चेक करें, आप अपने क्लिक्स को चेक करें। कल हमारा जो सेशन है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हम आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपनी इंप्रेशंस को, और गिग एनालिसिस के ऊपर है, ऑर्डर एनालिसिस के ऊपर है। तो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट ऑन दैट थिंग जो हमारा कमिंग सेशन होगा उसमें। make sure you all attend that session, which is very important, and how to make more impression on Fiverr, how to get more clicks on your gigs. So we will be talking about that as well. Any question in the last, any comment, kuch bhi? We still have 7 to 8 minutes to conclude this session. If you guys have any last minute suggestion, last minute comments, आई सी सम पीपल जॉइंड अस थोड़ा सा लेट। तो आप लोगों ने लाइक संजना, सना, उस्मान, आप लोगों ने प्रीवियस जो है वो चेक किया था हमारे जो 2 लेक्चर्स थे? How can you attract clients as a beginner? Usman, as we have already discussed that, you know, your profile is very important. Your profile says it all about you. Your descriptions, your writing style, your gig posters, everything attracts the client. So make sure your profile is up to the mark, and your graphics which you have given as a graphic posters, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियोस बनाएं गिग के ऊपर जो क्लाइंट को आपके बारे में ज़्यादा बता सके। मेक श्योर यू हैव नाइसली एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं गिग से रिलेटेड, आपकी जो स्किल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट वे में वहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। सो दीज थिंग अट्रैक्ट क्लाइंट्स एज पर माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न। Zahid is saying, sir, is it right that many clients order at night time? Of course, it's very important because you know because of the time difference, क्योंकि मोस्टली हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूके, यूएसए और यूरोप से होते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे दिन हमारे यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन ऑन नाइट टाइम। आप जो है वो इस चीज़ को माइंड में रखिए कि यू आर सर्विंग द वेस्ट कम्युनिटी। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा अपने आप को वो करना पड़ेगा। अदरवाइज जब जो है वो आपके क्लाइंट्स ज़्यादा आप पॉपुलर हो जाते हो, आपके क्लाइंट्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, तो उसमें जो ये होता है कि आप किसी भी टाइम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज वो भी हमारी तरह रात में या दिन में जागते रहते हैं। दे आर आल्सो ह्यूमन, बट दैट्स ट्रू, लाइक मोस्टली ऑर्डर कम्स इन नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग। All right, Sana, if you haven't gone through the previous lectures, just go through this week because next week is our last, next week we have our last 2 sessions. So I just want कि आप सब एक पेज पे रहे ताकि जो हमारे last previous sessions से we will be talking about more on financing on Fiverr and getting amount in your pocket, which is very important and it's very confusing as well. So try to attend those session and अगर आप प्रीवियस सेशंस आपने अटेंड नहीं किए होंगे तो आप जो है वो दूसरे सेशंस में आपको थोड़ा एम्बिगुअस लगेगा। सो मेक श्योर you have attended all those recorded sessions. Shiza is saying, sir, for education students, which are the most demanding gigs we can make or skills we can sell? Shiza, our second, I believe second or third session was on Fiverr for educators. उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की थी। जस्ट गो थ्रू दैट पीपीटी। उसमें हमने लेसन प्लान के बारे में, करिकुलम डिज़ाइन के बारे में, कोर्स आउटलाइन के बारे में, करिकुलम नॉट at the national level but at the classroom level हमने डिस्कस किया था। We also discuss about reflection writing, we also discuss about report writing, we also discussed about literature review and all those writing and other components related to education and research. We also talked about what we call it, uh, transcribing interviews, like you will be listening the audio and you will be transcribing them in the English. So these things, thematic analysis of your research of your clients. So these are some of the gigs that are very demanding nowadays. Sana is asking how we can add balance in our account, which is supposed to. Okay, Sana. So make sure when you are adding your balance, make sure you are on the buyer mode.
because there are two modes in Fiverr. One is selling, one is buyer. So when you are talking about, for instance, आप अपनी किसी friend से जिन्होंने लेसन प्लान की गिग की है, आप उनको आप पहले बायर मोड पे जाएंगे, आप उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो आपसे कार्ड की डिटेल मांगेंगे, ठीक है। मेक श्योर योर कार्ड इज आइदर ऑन मास्टर कार्ड और वीज़ा। सो फॉर इंस्टेंस जो नीचे आप एटीएम कार्ड होता है ना, उसके डेबिट कार्ड के नीचे वीज़ा या मास्टर कार्ड का लिखा होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो या घर में किसी के पास है या किसी फ्रेंड के पास है, तो आप उनको बाद में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, या आप ट्रांसफ़र कर दें, वो आप जो है ना उस कार्ड वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप उनको ऑर्डर करें, और वंस यू विल प्लेस द ऑर्डर, आप डमी उनको डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, एंड वो आपका एक्सेप्ट कर देंगे ऑर्डर $5 का। 5 से आई थिंक फाइवर विल टेक 1 to 2 डॉलर्स, आई थिंक $1 फीस। तो टोटल मैक्सिमम आपका $6 to 7 आपका जो है वो खर्च होगा एक रिव्यू के लिए। तो इट्स वेरी इजी। इफ यू वांट मी टू गिव यू डेमो of that, I can provide you demo as well. Tomorrow we will be talking about that thing, about your dummy reviews. So we can of course work on that. So I hope I'm clear on that. Any other question? No, इसरा it won't create any negative impact अगर आप किसी different groups में वो कर रहे हो, क्योंकि Fiverr आपको पता है, if somebody from our group is from CS department, they can tell us more about that, because वो algorithm पे होता है। जितना ज़्यादा आपको लोग आपको सर्च करेंगे और आपकी impression आएंगी, तो जैसे ही कोई भी उस गिग के बारे में सर्च करेगा, तो आपकी प्रोफाइल आगे आ जाएगी। So that is all about coding behind that particular gig. So it's very important कि आपके लोग जो है प्रोफाइल देख रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तानी लोग तो ऑर्डर नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बट आप जब भी कोई बाहर जो है वो करेगा, सर इज दैट ओके टू पे $7 फॉर 1 गिग रिव्यू? $5 से स्टार्ट करें। किसी ने अगर $5 वाली गिग बनाई है, तो आप उसको $5 का ऑर्डर दें, तो मैक्सिमम आपके $7 तो खर्च होंगे, बिकॉज फाइवर विल आल्सो टेक सम अमाउंट। और आप उनको रिव्यू देंगे, तो ऑफ कोर्स अगर उनके पास भी $10 होंगे, उनके पास भी $10 होंगे, तो आप एक्सचेंज कर रहे हो $7। बाकी मतलब यू आर नॉट वेस्टिंग दोज $7।